Students, wind system is a very important part of your climatology. इस वर्ल्ड में जो भी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नो डाउट इन दैट फ्लोइंग ऑफ एनर्जी विंड प्ले ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Very important role. Many kind of atmospheric phenomena completed due to effect of winds. Winds always plays very important role in the shifting of temperature, in the shifting of precipitation also. Winds always plays very important role in the shifting of heat and also in the shifting of moisture. Means air ही मॉइस्चर लेकर आती हैं, देन प्रेसिपिटेशन कराती हैं, देन स्टूडेंट सोचो कितनी टाइप की फिनोमेना होती जिसका हमारी लाइफ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं. यू कैन सी मैनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट in your life in many ways. So simply you can see in every literature, in every language, many kind of songs. Like just think about Bollywood. Bollywood में बहुत सारे जो songs मिलते हैं, गाने मिलते हैं, they are based on winds. ऐसा like दे जे पंजाबी सॉन्ग, ये जो सिली सिली ओंदी हवा उत्ते कोई रोंदा होवेगा, है ना, सुना होगा गाना आप लोगों ने. ये जो सिली सिली ओंदी हवा उत्ते कोई रोंदा होवेगा. या फिर इन हिंदी अनदर सॉन्ग इज जैसे चले हवाएं सनन सनन, जैसे उड़े परिंदे गगन गगन. लॉट ऑफ ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स मिलेंगे, दे आर बेस्ड ऑन विंड. या आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए, है ना. लॉट ऑफ सॉन्ग्स. दैट सॉन्ग्स आर सिंपली इंडिकेटिंग विंड हैज डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ओवर द ह्यूमन लाइफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा हम लोग देखते हैं कि ये विंड है क्या. व्हाट इज विंड? इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज विंड, देन सिंपली यू कैन से wind is horizontally and slow movement of the air. कह सकते हैं क्या भाई? Wind is a basically horizontally and slow movement of air. जब एयर कोई भी स्लो चलती है एंड हॉरिजॉन्टल चलती है, बच्चों ध्यान रखना दिस, देन यू कैन से विंड है. एयर जब ऐसे चलेगी तब, जैसे सोचो इन दैट डायग्राम एयर मूविंग अपवर्ड, सो दैट इज नॉट ए विंड, that is convectional current. But while over the surface of earth air moving horizontally but slow, because air की स्पीड बढ़ जाएगी then कुछ और हो जाएगा. like there is a storm, maybe there is a cyclones or maybe some other, कुछ और हो सकता है. तो यहाँ पे एक बात आपके माइंड में रहना चाहिए कि स्लो एंड हॉरिजॉन्टल मोमेंट इज विंड. एयर का जब स्लो एंड हॉरिजॉन्टल मोमेंट होता है बिकॉज, और हाँ सरफेस पे हो, जब देखो यहां पे मैंने कहा ये एयर मूविंग अपवर्ड, देन दिस इज कॉन्वेक्शनल करंट. बट व्हाइल द एयर मूविंग अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर, इट मूविंग अगेन हॉरिजॉन्टली बट अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर, इट मीन्स इन द ट्रोपोस्फियर, अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर, देन दिस इज नोन एज जेट स्ट्रीम. याद रहेगा, दैट इज जेट स्ट्रीम. देन अगेन दिस एयर नाउ स्लो डाउन, ये धीरे धीरे नीचे आ रही है. अगेन दिस नोन एज कॉन्वेक्शनल करंट, डाउनवर्ड कॉन्वेक्शनल करंट, एंड दिस इज अपवर्ड कॉन्वेक्शनल करंट.
So through this diagram simply you can say कि air move in a circle, घूमती रहती है, घूमती रहती है. Yes, air always move in circle. So you can say this is a cell. आपने सुना होगा, you heard about Hadley cell, Ferrel cell. Like you can say this is a Ferrel cell. This is a Ferrel cell, or you can say Hadley cell, or you can say polar cell. This moving of air in circle is simply known as atmospheric circulation. This phenomena, complete phenomena, is known as atmospheric circulation. In that atmospheric circulation, the air which moving on the earth's surface slowly, that is simply known as wind. So बच्चों ध्यान रखना, this is wind. And what we are going to discuss? We are going to discuss about winds. तो मैंने अब डेफिनेशन आप लोगों को बताया कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है. देन आफ्टर you can say what the significance of winds. Yes, already I have told the students, wind has great and great significance. जरा इमेजिन करो, विंड नहीं होती तो इट माइट बी अर्थ पे लाइफ नहीं होती. It's a very interesting fact, students. In between 0 to 38 degree north and 38 degree south, surface receives more and more insolation than terrestrial radiation. But just opposite of this, or beyond that latitude 38 degree north and 38 degree south, surface receives less amount of insolation but more amount of terrestrial radiation. It means over Earth's surface there is a not evenly condition of insolation and terrestrial radiation. Somewhere high amount of insolation but less amount of terrestrial radiation. It means that region, or you can say in between 0 to 38 degree north and 38 degree south, that region has, just imagine, surplus. Like through that diagram easily you can understand 0 to 38 degree and half north and 38 degree and half degree south. This region receives more and more amount of insolation, but it radiates in comparison of that less amount of insolation. Means this region is region of surplus. ऐसा क्यों भाई? बिकॉज यहाँ पर सनरेज वर्टिकल आती हैं, सो उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. सो दिस रीजन रिसीव्स मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन. तो देखो बच्चों, मान लो जस्ट मैंने इमेजिन किया यहाँ पर 3 देखो रेज आ रही हैं, बट कितनी जा रही हैं? 2. तो इसका मतलब 1 कंटिन्यूअस प्लस हो रहा. बट इन कंपेरिजन ऑफ दैट रीजन इन दैट एरिया, ये देख, हाई लेवल ऑफ रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन means energy released by the surface. It means this is a region of deficit and this is a region of surplus. या सोचो विंड नहीं होती तो क्या होता. It's a very interesting fact. Wind shifted this surplus energy toward that area and this deficit energy toward that area. Means यहाँ पे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर या ज़्यादा हीट जो है उसको यहाँ पे शिफ्ट करती है और यहाँ से लो टेम्परेचर को इधर. सो देयर इज ए बैलेंस ओवर अर्थ सरफेस. सो यहाँ पे बैलेंस दिखाई देता है. ना हो तो यू कैन इमेजिन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन
you can find out in both hemisphere. तो पहला मैंने क्या बताया कि wind always playing important role in the shifting of heat, so there is a balance, so there is a life everywhere. This is the beauty of winds. Then another thing is there, it shifted humidity from one place to another place. Water is always found, or water is mainly found in the ocean. In the ocean. बट सोचो बच्चों, ओशन से वाटर कैसे लैंड सरफेस पे पहुंचता है? तो एज यू नो, वाइल विंड ब्लोज ओवर द सी सरफेस, it pick up huge amount of moisture, and the air which laden with the moisture, or wind which laden with the moisture, while reach on the land surface, according to their topographical condition, it starts rainfall. बारिश शुरू कर देती है हाई माउंटेनस एरिया में इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, इन द लोअर एरिया इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. एंड आइदर रेनफॉल और स्नोफॉल. स्नोफॉल होगी तो मेल्ट होगी, देन वाटर बनेगा, एंड रेनफॉल है तो खैर ड्रॉप जब सरफेस पे गिरेंगी इकट्ठी होंगी, देन वाटर बनेगा, एंड देन फाइनली दे फॉर्म रिवर्स. रिवर्स, इमेजिन करो स्टूडेंट्स, रिवर ना हो तो लाइफ कैसी होगी, इसलिए गाने बहुत सारे रिवर्स पे मिलते हैं. इसलिए इन इंडियन सोसाइटी रिवर ऑलवेज इमेजिन एज ए मदर. वी कॉल गंगा मैया, सुना होगा आप लोगों ने, वी कॉल गंगा मैया. सो विंड प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना. तो इस तरह से यू कैन से इन अ वेरी सिंपल मैनर, इन द शिफ्टिंग ऑफ हीट, इन द शिफ्टिंग ऑफ मॉइस्चर, एंड मैनी मोर. Again, on the basis of their nature, these winds divided in three categories. These winds may be divided in three categories. The first is prevailing winds, or permanent wind, permanent winds, याद रहेगा. देन दिस periodic wind, then this local wind. All winds are prescribed in your syllabus, and many times question has been asked in your mains examination. And again these winds divided in many subcategories, like on the basis of their direction you can say easterlies, this westerlies, then this polar. This again divided in many parts, like sea breeze and land breeze, monsoon. These are part of periodic winds. And this again local wind divided as a warm wind and cold wind. No doubt, students. For the discussion of this whole topic require very long time. So I would like to say, please come in my class and learn what is geography. Definitely you feel each and every class like a geography, है ना.